Hi, good morning. In today's class, we will be discussing about the adaptations in the C4 plants to avoid photorespiration. In yesterday's class, we discussed that how the photorespiration is wasting the carbon dioxide, which is being fixed by the C3 cycle. Now we will discuss that how C4 plants have modified or adapted their body in order to avoid the photorespiration process. So let's start with the adaptations. The first adaptations in the C4 plants is the presence of dimorphic chloroplast. Dimorphic means two forms of the chloroplast. So two forms of the chloroplast are granum and agranum chloroplast. Granum chloroplast means which contain thylakoids and granum. Okay, thylakoids and granum are present. Okay, like if this is the chloroplast, outer membrane of the chloroplast, then we have inner membrane of the chloroplast. Here small circular structures are there, which are the thylakoids, and group of thylakoids is called as granum. Okay, this whole group of thylakoid is the granum, and single circular structure is the thylakoid, right? And in agranum chloroplast there will be no granum or thylakoid, ठीक है, in this agranum chloroplast. Now we have already done the light reaction, which involves photosystem 1, photosystem 2, and it involves photolysis of water, right? So you might have observed कि जब हम light reaction कर रहे थे, जिसमें आपके photosystem 1 and photosystem 2 involved थे, this reaction was actually taking place in the thylakoids, right? And during light reaction, photolysis of water was also taking place, that is breakdown of water in the presence of light, which results in the production of hydrogen ions, oxygen and electrons, right? तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही थी लाइट रिएक्शन में, और ये लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? थैलाकॉइड्स में. इट मीन्स द क्लोरोप्लास्ट विच इज़ ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर थैलाकॉइड्स हैं, तो उसके अंदर ये लाइट रिएक्शन भी होगा, ठीक है. और अगर लाइट रिएक्शन होगा तो आपकी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट agranum क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे ग्रैनम नहीं है, थैलाकॉइड्स नहीं है, सो इनके अंदर लाइट रिएक्शन भी नहीं होगा, नो लाइट रिएक्शन. और अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ओके. और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए. फोटो रेस्पिरेशन कब होती है? व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. टेम्परेचर हाई होगा तो स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाएंगे. स्टोमेटल पोर्स क्लोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, तो प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एंड उससे फोटो रेस्पिरेशन होगी. तो एक कंडीशन तो हो गई फोटो रेस्पिरेशन की कि टेम्परेचर हाई होगा, तब ये प्रोसेस चलेगा. सेकेंड कंडीशन क्या हो गई कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी. सो when temperature is high, oxygen concentration is going to increase, and these both the conditions will lead to process called photorespiration.
तो अगर हमें फोटो रेस्पिरेशन को रोकना है तो हमें टेम्परेचर को भी हाई नहीं होने देना और हमें ऑक्सीजन को भी कम रखना है। मतलब अगर हमें फ़ोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करना है तो उसके लिए एक तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए, दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है इट शुड बी हाई एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। सो C4 प्लांट्स जो हैं दे हैव मेड सच अडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी विच विल कंट्रोल दीज टू फैक्टर्स। ना तो वो टेम्परेचर हाई होने देंगे, ठीक है, उसको लो रखेंगे। सेकेंडली वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को भी नहीं बढ़ने देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखेंगे। सो इससे क्या होगा, उसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल फिक्स करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट नहीं होगी। तो अब फर्स्ट अडेप्टेशन हमने की कि इनमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट है और ए ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट है। ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट जो है that will be present in the mesophyll cells and the agranum chloroplast will be present in the bundle sheath cells. Presence of bundle sheath cell is very important feature of the C4 plants. It is very important modification in the C4 plants to avoid photorespiration. Okay. So, in the mesophyll cells, granum chloroplast is there. तो उसके अंदर लाइट रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है, राइट। ए ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके बंडल शीथ सेल्स में है और ए ग्रैनम के पास ग्रैनम नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। इट मीन्स जो बंडल शीथ सेल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। तो हमने एक कंडीशन को तो कंट्रोल कर लिया कि हमने C4 प्लांट्स में एक दो बंडल शीथ सेल बना दिए और उन बंडल शीथ सेल्स के अंदर हमने ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ होने दी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑक्सीजन वाली कंडीशन को हमने कंट्रोल कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट बंडल शीथ सेल्स एंड क्रैन्स एनाटमी। ओके, सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ bundle sheath cells and Cran's anatomy. ओके, यहाँ पे क्या होगा, लाइक हमने डिस्कस किया था कि जो लीफ की आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट कंटेन्स वेरी टाइटली पैक्ड सेल्स, दैट इज एपिडर्मिस विच कंटेन्स स्टोमेटल पोर्स, राइट। एपिडर्मिस के नीचे हमने डिस्कस किया था कौन से सेल्स होते हैं, आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं, राइट। दिस वॉज अबाउट दी C3 प्लांट्स। C3 साइकिल तो यूनिवर्सल है, ये सब में होगा, ठीक है। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो ऐसे सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स आ जाएंगे। Okay, so these are your mesophyll cells which are slightly elongated. In the center we have vascular bundles. These are mesophyll cells. This is the vascular bundle. This vascular bundle contains xylem and phloem together. Xylem helps in the water transportation in the plant and phloem helps in the food transportation in the plant. Then around the vascular bundle we have
thick walled cells. Okay, here some thick walled cells are present. And these thick walled cells are actually called as bundle sheath cells. I am making them thick because their walls are slightly thick. Okay, so these are your bundle sheath cells.